Assalamualaikum सबको and I'm up here with my first video. I would like to tell you the fiscal year report of the Japan balance of payment for the year 2021 to 2022 fiscal year starting from March to March. The balance of payment पहले होता क्या है? Balance of payment is the difference between imports जो एक मुल्क दूसरी ग्लोबली दुनिया से प्रोडक्ट्स खरीदता है और एक्सपोर्ट्स जो दुनिया में बेचता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि शायद पेट्रोल गुड्स वगैरह आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उसके अलावा सर्विसेज भी आती हैं और डिफरेंट इनकम्स भी आती हैं. जैसे आपने एक कंट्री देखी, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जैसे पाकिस्तान में अराउंड आई थिंक 20% इंटरेस्ट रेट है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहेंगे इस मुल्क पे इन्वेस्ट करना, पैसा भेजेंगे और उसका जो इन्हें रिटर्न जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा. एक और होता है रेमिटेंस, जो आई थिंक आजकल लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक आम बात है कि इमरान खान टाइम पीरियड में फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत बड़ी, एंड इट्स ट्रू दे रोज अ लॉट, व्हिच इज आल्सो इंक्लूडेड इन द surplus of the balance of payment, which is a positive thing for the country. And lastly the services, जैसे लोग एजुकेशन लेते हैं which they are proud कि हम we are paying in dollars, that also is but a disadvantage for their country. लेकिन जिस मुल्क के अंदर उनका टीचर, उनका प्रोफेसर बैठा है और आप जहां उन्हें पैसे भेजते हैं, उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है. हम अपने टॉपिक पे आते हैं. जापान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिस्कल ईयर की बनी है वो अराउंड डेफिसिट ऑफ अराउंड 20 point something trillion yuan. The Japanese yuan is a currency which is the currency they use in the nation of Japan and while dealing with the other countries to exchange. The main reason for the deficit is, but I would like to tell you, the imports were 120 trillion and the exports were only around 99 point something trillion. The main imports rose by 33.25% within the year, while exports only rose by 15.5%, which resulted in the deficit. The major imports और exports के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. जो जापान की मेन imports रही हैं वो रही है फ्यूल प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल और कोल. एनर्जी प्रोडक्ट्स उनके पास इतने अवेलेबल नहीं थे कि दे कुड फिल द डोमेस्टिक डिमांड, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहे थे. लेकिन एज वी नो कि इंटरनेशनली द ग्लोबल प्राइसेस रोज, जिस वजह से बिकॉज द डिमांड इज इनइलास्टिक, जितना आप करें वो नेसेसिटी है, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस वजह से जापान कंटिन्यू टू इंपोर्ट, जिस वजह से उनकी जो इंपोर्ट्स है दे रोज बाय ग्रेट परसेंटेज. वेदर आज जो उनकी एक्सपोर्ट्स थी, जिसके अंदर मेन आई थिंक मोस्ट पीपल नो दैट फेमस कार ब्रांड्स बिलोंग टू जापान. उनकी मेन जो जापान की एक्सपोर्ट्स थी कार, which accounts for 18% of the Japanese exports of the 99 trillion, which is I believe around, you can calculate it later on, but the main thing is that globally the EU saw a rise in the interest rate to around 3.5%. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से दो चीजें होती हैं. एक तो लोग पैसा बोरो करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है. मतलब अगर एक साल के ऊपर अपन 3.5% $100 वो या $100 वो बोरो करते हैं, उन्हें $103 और 50 सेंट्स वापस करने पड़ेंगे, तो डिस्करेज होते हैं. और लास्टली से ये होता है कि इंसान, एक बंदा कहता है फॉर द फ्यूचर सेविंग्स, हम क्यों ना जो पैसे भी खर्च कर रहे हैं ऑन अननेसेसिटीज और लग्जरिटीज, हम वो पैसे सेव करें, एक अच्छा रिटर्न पाएं और उन पैसों को सेव करके इन फ्यूचर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करें या फिर अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाएं. सो दिस इज फॉर व्हाट वी कुड टॉक अबाउट जापान्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. Moreover, I would like to tell you that France, India and Japan, three very growing economies, have teamed up to help Sri Lanka get out of the debt trap of China. I would like to tell that China दुनिया के सबसे ज़्यादा foreign reserves contain करता है, which is around $3,248 billion. And these three economies want to help Sri Lanka get out of the debt trap and the extreme और a very great extent Chinese influence. मैं आपको बताता चलूँगा कि श्रीलंका has gone for the foreign investments from Saudi Arabia. Sri Lanka, as we know, defaulted a few months ago and now it needs help to get out of this economic depression. उन्होंने एक $3 billion का IMF बेल आउट पैकेज लिया है, लेकिन उसके अलावा उन्हें ग्लोबल हेल्प चाहिए होगी to get out of this mess they are in. which mainly occurred due to two reasons: the COVID-19 and the mismanagement of the economy.
Saudi Arabia, which previously helped countries like Egypt and Pakistan, has come up here once again. As we know, Saudi was known for its oil reserves, but as time passes, they have realized that it is a non-sustainable resource. एक वक्त आएगा जब ऑयल खत्म हो जाएगा या एटलीस्ट कम हो जाएगा, तो सऊदी इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि ऐसी काफी कंट्रीज है. सऊदी अरेबिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द टर्शियरी सेक्टर. आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि ऑयल इज इन द प्राइमरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर के अंदर अपने सऊदी अरेबिया के अंदर भी टूरिज्म इंडस्ट्री में जा रहा है. दे हैव मेड सेक्रीफाइस, लाइक उन्होंने बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उनका मज़ार हटा के वहां तक टूरिज्म के लिए होटल्स और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुके हैं. इस तरह श्रीलंका विल गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, उनके पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगी, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है. एंड मे बी इंशाल्लाह इट विल हेल्प श्रीलंका टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन. मैं आपको बताता चलूंगा कि श्रीलंका, which is a defaulted country, has become ready to help Pakistan by sending them 2 elephants as a gift. Recently on Eid al-Fitr in the Karachi Zoo, Noor Jahan, an elephant passed away. Last year in the Lahore Zoo, Suzy, an elephant, also passed away. और इस वजह से both in Lahore Zoo और Karachi Zoo के अंदर इस वक्त elephants मौजूद नहीं है. So Sri Lanka has stepped forward right now, and as confirmed by Yasin Joya, our representative, कि Sri Lanka will be gifting 2 elephants to Pakistan. And I would also like to share an interesting fact with you guys कि during 2000 to 2011 in Sri Lanka saw a rise in the number of elephants from 3,150 to around 5,879. Lastly, I would like to tell that almost daily an elephant dies in Sri Lanka. I would also like to tell you that, as reported by Dawn News, it is a little embarrassing news for the people of Pakistan that the state-owned enterprises, the government-run enterprises, the businesses run by the government of Pakistan are reported to be the worst in South Asia, which on an annual basis has occurred 458 billion rupees losses, which mainly resulted in a budget deficit.